Hi, my name is Karan Arjun Singh and I'm a Foley artist and a Foley supervisor at Just Foley Studio. मैंने लगभग 2000 फिल्मों से ज़्यादा की हुई हैं, लेकिन सबका नाम यहाँ लेना मुश्किल है। बट कुछ फिल्मों का नाम जैसे सुल्तान, नीरजा, सिंघम, दंगल, रईस, सीक्रेट सुपरस्टार, गोलमाल अगेन, तुम्हारी सुलू, फुकरे रिटर्न्स, टाइगर जिंदा है, क्रिश 3 और हाँ, बाहुबली। When we see a reel, all my attention is to entire frame. You know what is happening where. जो mind है वो हमेशा sound के बारे में ही सोचता रहता है. Foley ये live sound effects है. जैसे एक कैरेक्टर चल रहा है तो उसकी चलने की आवाज़, एक कैरेक्टर बैठ रहा है उसके बैठने की आवाज़, कुर्सी खींचा, और किसी ने क्लैप किया, उसने क्लैप की आवाज़, कोई भी हलचल हो रही है फिल्म में तो उसको क्रिएट करना वापस। अब ये जो जस्ट फॉली का रूम है ये हमारा कुछ 10 बाय 16 का रूम है और ये काफ़ी है एक फिल्म का फोली। कोई भी कितनी भी बड़ी फिल्म हो यहाँ हम कर सकते हैं। In all the action sequences, the location props are artificial. Like whatever walls you're seeing, it's artificial. Whatever props hitting the actor or, everything is, artificial. So to give it real feel and real, solid impact to the action, we need to use all real props here in Foley Studio. I am a 90 kg guy, so but when I give a footstep, say for Kareena, so I have to sound that 40, 45, 50 kg light and walk like her. ये हुमा कुरैशी की सैंडल है, तो ये उसने 1.5 इश्किया में पहनी थी। अब ये हमारे लिए एडवांटेज इसलिए है क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग इसको पहन पा रहे हैं। बम ब्लास्ट में ऐसा होता है कि जब ब्लास्ट होता है तो घर टूट रहा है, खिड़कियाँ हैं वो साथ में गिर रही हैं, ब्रिक्स गिर रहे हैं, उसमें डस्ट गिर रहा है, तो वो सारी साउंड्स हम लोग क्रिएट करते हैं ब्लास्ट में। To learn proper Foley, it will take years to get it, right, because the emotions, the, authenticity, everything, it's difficult, to get it right.